ओ माय गॉड, सौरभ गांगुली से मिलने का मौका। जी हाँ, इस 28 से 31 मार्च टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया आखिरी मौका सेल और दादा से मिलने का मौका। सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और तो और 2 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹279 में। तो अगर आप एसएससी, बैंक, टीचिंग, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि यह मौका नहीं मिलेगा दोबारा। Hi, good evening everyone. This is Shefali Singla, and in this session we are going to discuss few previous year questions on the basis of DBMS and data structures. तो बच्चे ऑलरेडी आपको मालूम है कि लास्ट 3 डेज से हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले PYQs कवर कर रहे हैं in order to understand that what sort of questions can be asked in the exam, and after that from Monday onwards we are going to start with the content. We are going to start with the foundation batch और आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो एंड अलोंग विद दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मास्टर सीरीज इन विच वी विल बी कंडक्टिंग द क्विजेस एज वेल। क्विज कंडक्ट करने का पर्पस ये है कि जो भी चीजें आपने सेशन में अंडरस्टैंड की हैं, आपको कितनी क्लैरिटी हुई है, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देन आई विल बी मेकिंग फ्यू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स फॉर यू गाइज एंड ऑल्सो देयर इज सम सरप्राइज जो हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया है, बट उसको रिवील थोड़ा रुक के करते हैं। चलिए, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। मेजरली क्वेश्चंस जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स में से आज लिए हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीज एंड ट्री ट्रेवर्सल्स। तो ट्रीज और ट्री ट्रेवर्सल्स आपको मालूम है कि किसी भी एग्जाम में यूजुअली जितने भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, if data structure is there, so definitely you can expect one question from trees or tree traversal. So with the help of that, today we'll understand 2 to 3 concepts through questions. Okay, so for each question I'll be giving you 30 seconds ताकि आप question read कर लो. I'm not expecting the correct answers. If you know the answer, write that in the chat section. But if you don't know the answer, question read कर लो, try to understand that what is asked in the question. बाकी मैं डिस्कस करूंगी। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्री ट्रेवर्सल, बट इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, आपको मालूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्री एंड देन यू हैव टू फॉलो द ट्रेवर्सल। ओके, सो गो अहेड। Here you are given with the pre-order traversal of a binary search tree, and we have to find out the post-order traversal. Those who have joined the session, guys, quickly give me the confirmation if the audio and the video is fine. I hope कि audio and video में कोई problem नहीं है. I'm audible. Question visible है. स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वी आर गिवन विद द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। एक प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है दैट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज ऑलवेज द असेंडिंग ऑर्डर। रीजन मैंने बताया हुआ है, जिन लोगों को रीजन नहीं पता, जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, हर एक चीज का हम रीजन डिस्कस करेंगे इन द फाउंडेशन बैच। तो एनी हाउ, let's quickly write the in order of a binary search tree. In order, we are given with the pre-order, we have to find out the in order. In order is nothing but that is the ascending order. So whatever elements we are given, we have to write that in the ascending order. So here the ascending order is, first of all, its smallest element is 2, then next one is 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19 and 20. So these are the elements written in the in order. Now we know the pre-order of a tree and in order of a tree. On the basis of this we can construct the tree. अब फटाफट से tree construct करो। ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर गिवन है तो फर्स्ट एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट, इफ पोस्ट ऑर्डर दैट मींस लास्ट एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट, and in order is used in order to distinguish between the elements of the left subtree and the right subtree. So here, since we are given with the pre-order traversal of a tree, so
First element is 12. This means that 12 is the root element. 12 is the root element. So 12 is lying here. तो 12 के लेफ्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? These 6 elements will be on the left of 12. Out of these 6 elements, 8 is coming first. That means of the left subtree, 8 will be the root element. अब 8 के लेफ्ट पे 3 एलिमेंट्स है. इनमें से पहले कौन आ रहा है? 6 is coming up. Out of these 3 elements, that is 6 to 7, 6 is coming first. Then 6 is in the middle of 2 and 7. So 2 will be on the left क्योंकि 2 in order में left side पे है and 7 is on the right side. अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड फास्ट है, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता है, फॉर देम इट्स इजी, स्पीड मस्ट बी स्लो. और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आता बच्चे, यू कैन राइट दैट इन द चैट सेक्शन. So I'll reduce the speed. Otherwise, I'm going to discuss all these points in detail in the foundation batch, which is going to start from Monday. Okay. All right. So 6 to 7, this is over. 9 and 10 were on the right hand side of 8. 9 and 10 means 9 is coming first, 10 is on the right hand side. Same concept will be applying on the elements which are present on the right hand side of 12. So we'll go to the right subtree of 12. Here 10 is over. These are the remaining elements. 16 is coming first. 16. To the left of 16, we have only one element, that is 15. So 15 will be added here. Remaining elements 17, 19, 20 are on the right hand side. Out of 17, 19 and 20, 19 is coming first. So 19 will be the root node. Preorder helps us to determine the root node. Now to the left of 19, we have 17 and to the right, we have 20. So this is the tree that we have constructed from the given pre-order and the in-order. Now we have to find out the post-order. I have discussed two approaches to traverse the tree. एक तो standard approach है. Post-order means, post means after. So root will be visited after visiting the elements of left subtree and right subtree. मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि बेटा blanks mark कर लो और फिर उसके बाद you can write down the post-order. But this is bit time consuming. Like अगर 1 मिनट का टाइम चाहिए तो हम पोस्ट ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं within 10 or 20 seconds. So for that I had shared one trick. Post order means you have to print the elements. किस तरीके से प्रिंट करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड. लेफ्ट मोस्ट से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमेशा हम पहले लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स को विजिट करते हैं एंड देन visiting the elements of the right subtree. That's why we are going to start it from the root, from the leaf level. Leaf level पे कौन सी नोड से? leftmost. So at the leaf level, I'm writing the post order here. हमारे पास यहाँ पे we have 6 leaf nodes, 2, 7, 10, 15, 17 and 20. Leaf node is some node which is not having any child. So there are 6 leaf nodes, out of which 2 is the leftmost leaf node. So I'm going to print 2 first. अब ये 2 print हो चुका है, यानी कि 2 is, let's assume this is deleted. Okay, now we are left with 5 leaf nodes. 6 is not a leaf node because 6 is still having one more child. So to the 6 के right पे हमारे पास एक node है. So leaf node is 7, 10, 15, 17 and 20. So the minimum one is the leftmost one is 7, so 7 will be printed next. This is also over. Now 6 becomes the leaf node. Okay, so 6 will be printed next because this is the leftmost leaf node. This is deleted. Then next comes is 10. This approach will be followed until all the elements are printed. Then leftmost is 15, 17, 20, 19, 16 and 12. So just find out that this is matching with which option. It is 276. 276 आना चाहिए. So A cannot be the answer. 276. बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है. So undoubtedly the answer for this question is it's option B. B is the right answer for this question. Is it clear, guys? Those who are following this session live, please give me the confirmation if it's clear. बच्चे जितना ज्यादा आप लोगों का इंटरेक्शन लेवल होगा, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, उतनी क्लैरिटी आएगी. सो आज वाले सेशन में हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस करने वाले हैं.
ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स नहीं है. This is the next question. Here we have to find out the time complexity of heap sort in worst case. Heap sort in worst case. Heap sort कैसे वर्क करते हैं? वी आर गेटिंग द हीप ट्री. इट कैन बी द मैक्स हीप ट्री और मिन हीप ट्री. You know that what is max or min heap tree. So max heap tree में root element is the maximum one, and in min heap tree root element is the minimum element. So every time when we are going to delete the element, we have to do the adjustments. कितनी adjustments होंगी? It depends on the levels of a tree. तो हीप ट्री में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है. वन इज द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, it is said that heap tree is constructed. Structure property क्या होनी चाहिए? It should be a complete binary tree. Complete binary tree means if we have n elements, then there will be log n levels, right? अगर हम एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं, मैक्सिमम स्वैप्स कितने होंगे? जितने ट्री में लेवल्स हैं, दैट इज log n. अगर सॉर्टिंग की बात हो रही है, दिस मीन्स दैट वी हैव टू रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स. टू डिलीट वन एलिमेंट, इट इज टेकिंग log n. Pre-order creation repeat. Okay, you mean okay, let us discuss this question, Nikita, then I'll be repeating the first question again. Okay, तो एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमें log n टाइम चाहिए. और जब हम सॉर्टिंग की बात करते हैं, दिस मीन्स दैट वी हैव टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि हमें सारे एलिमेंट्स रिटर्न करने. एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अगर log n टाइम है, तो n एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट इज टेकिंग log n टाइम, सेकेंड एलिमेंट इज ऑल्सो टेकिंग log n टाइम, थर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो टेकिंग log n टाइम. तो टोटल हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? इफ n एलिमेंट्स आर देयर, log n, ये कितने टाइम्स आया? log n plus log n plus log n times if n elements are there. This means that it comes out to be n log n. Very good. Yes, Nikita. So we can say that the worst case time complexity for heap sort is n log n. That is nothing but it's option C. This question was asked in year 2021. Okay. So we have one doubt that how I constructed the tree from the pre-order. तो चलिए वापस चलते हैं इस क्वेश्चन पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री ऑर्डर से डायरेक्टली हम ट्री नहीं बना सकते. ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी नीड प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. मेक सेंस? अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज होगा कि मैम इन ऑर्डर यहाँ पे गिवन नहीं था, तो इन ऑर्डर कैसे आया? बाइनरी सर्च ट्री की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दैट द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, दिस इज द रूट एलिमेंट, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री. अब ये जो बाइनरी सर्च ट्री है, दिस सेज दैट द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री आर स्मॉलर देन द रूट एलिमेंट. Yes, and root element is smaller than the elements of the right subtree. This is the condition, this is the property for binary search tree. Now we have to find out the in order. In order क्या बोल रहे? In order says that in means बीच में, यानी कि root किसके बीच में आएगा? Left subtree and right subtree के बीच में. Root element will be visited in between the elements of left subtree and right subtree. Okay. अब ये किसकी कंडीशन है? फॉर बाइनरी सर्च ट्री, लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन रूट, रूट इज स्मॉलर देन राइट सब ट्री एलिमेंट. तो बेसिकली व्हाट इज दिस कमिंग अप? दिस इज गोइंग टू फॉर्म द असेंडिंग ऑर्डर. तो यहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, इफ we have to find out the in order of a binary search tree, तो given हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता. If you know the elements, simply arrange the elements in the ascending order. ये point clear हुआ? Yes? Same thing I have applied here. So I was given with the elements. इन सारे elements को मैंने ascending order में arrange कर लिया in order to get the in order of the given binary search tree. So these are the elements in the ascending order. ठीक है? Now we are available with the pre-order and in order. अब इससे हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. प्री ऑर्डर क्या बोलते हैं? प्री ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स बिफोर, सो रूट इज प्रिंटेड
बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, है ना। तो अब ये एलिमेंट्स जो है प्री ऑर्डर में हमें ये तो पता चल गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी द रूट एलिमेंट, बट वी डू नॉट नो दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द लेफ्ट सब ट्री और कितने एलिमेंट्स राइट सब ट्री में आएंगे, इनको तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसको किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द इन ऑर्डर। इन ऑर्डर सेज दैट लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स, देन रूट एंड राइट सब ट्री, करेक्ट। अब रूट कौन है? 12। तो 12, हियर इज द 12, ये रहा 12, तो ये 12 कौन है? दिस इज द रूट नोड। जितने भी एलिमेंट्स 12 से पहले आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसके होंगे? लेफ्ट सब ट्री पे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर दिया, आप लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। 12 के लेफ्ट पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स हैं। सब ट्री का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सिमिलरली 12 के राइट साइड पे जो भी एलिमेंट्स हैं दोज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ राइट सब ट्री। अब यहाँ पे हम रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट ट्री। अब हमारे पास 6 एलिमेंट्स आए, इनमें से रूट कौन सा होगा? विच एलिमेंट इज कमिंग फर्स्ट? 8। 6 एलिमेंट्स है, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 6, 2, 7, 9, 10, ये एलिमेंट्स हैं लेफ्ट सब ट्री की। लेफ्ट सब ट्री में 8 is coming first, so 8 will be the root element, so next root is 8. Now check here, out of these 6 elements, now we'll be focusing on the remaining 6 elements. To the left of 8, 3 elements are there. ये 8 root हो गया. To the left of 8, 3 elements are coming up, 2, 6, 7. और राइट पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 8 के राइट पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 9 and 10. Are you getting this point? Or I'll erase the tree whatever I have constructed, then we'll construct it again. Are you all getting this point? अब फिर से उठाएंगे ये 3 एलिमेंट्स 2, 6, 7, बेसिकली इन ऑर्डर डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के एलिमेंट्स को, और प्री ऑर्डर जो भी आपके पास लेफ्ट सब ट्री में मल्टीपल एलिमेंट्स है उनमें से हमें यूनिक रूट नोड बता रहे हैं। नाउ 2, 6, 7, these are the 3 elements 2, 6, 7, इनमें से पहले कौन आ रहा है? 6 is coming first, तो 8 के लेफ्ट सब ट्री में 6 will be the root node. 6 रूट नोड हो गया। अब 6 रूट नोड हो गया। 2 and 7 देखो कहां पे आ रहे हैं? 2 is present on the left hand side and 7 is present on the right hand side. तो 6 के लेफ्ट पे 2 आ गया, 6 के राइट पे 7 आ गया। Same thing we have applied for the remaining elements. Here we got 2 and to the right we got 7. 9 and 10 में से which element will be the root node? देखो 9 और 10 में से पहले कौन आ रहा है? 9 is coming first, so 9 will be the root and 10 is present on the right hand side of 9. तो यहाँ पे हमने 10 को कहां पे रखा? 9 की राइट हैंड साइड पे। Is it clear? अब हो जाएगा निकिता। Now will you be able to handle these type of questions? तो इस तरीके से बेटा हमने प्री ऑर्डर से इन ऑर्डर फाइंड किया, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दोनों लेकर हमने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट किया, and then we have traversed this tree in the post order because we were supposed to return the post order traversal of the resultant tree. Hope you got the answer. So let's move on to the next question. This is already done. So बच्चे जिस तरीके से आप अभी लाइव सेशन में डाउट्स पूछ रहे हो, सिमिलरली यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शेफाली मैम टेक्स्ट बुक। द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग दिस ग्रुप इज, एक तो डेली जो भी यूट्यूब सेशन पे मैं पीपीटी यूज कर रही हूँ, जो भी हमारी फाइल है, आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल इन दिस ग्रुप इन द पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, तो आपको अलग से क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, discussion and doubt solving will be there. Whatever doubts you have, you can post that in the group so that I can answer them in the group. और अगर लगता है कि detailed explanation is required for that question,
तो मैं उस डाउट को पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट डाउट इन द लाइव सेशन. Okay, you can directly interact with me. Apart from that, quizzes and polls will be there. Quiz के लिए हम मंडे से मास्टर क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं. टाइमिंग क्या होगा और उसके अलावा एक सरप्राइज है जो हम वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं, बट आई विल बी रिवीलिंग दैट सरप्राइज इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज you have to join the telegram group. Okay, तो इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की आपको जरूरत नहीं है. मोर ओवर द लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप अभी भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो. ओके, इन केस इफ यू आर अनेबल टू फाइंड दैट, जस्ट लेट मी नो. So let's move on to the next question. Now this question was asked in 2020. Very easy question. Simply you are given with the tree and you have to return the pre-order of a tree. दो अप्रोचेस है. एक आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, दूसरा प्री ऑर्डर मीन्स प्री मीन्स पहले, सो रूट विल बी विजिटेड बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री. तो पहले मैं स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ करती हूँ, उसके बाद विल अप्लाई द शॉर्टकट. सो रूट फॉर दिस ट्री इज ए. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, जस्ट काउंट द एलिमेंट्स. बट मैं इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. तो जहां पे हम टाइम सेव कर सकते हैं, बेटर आइडिया इज कि हम टाइम सेव करें एंड वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन द क्वेश्चंस. सो लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं? हियर वी हैव 4 एलिमेंट्स, राइट? तो लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, सो आई एम मार्किंग हियर 4 ब्लैंक्स. इन द राइट सब ट्री वी हैव 7 एलिमेंट्स, so I am marking 7 blanks. These are the elements of left subtree. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now same concept will be applying on the subtree. Here B is the root node, तो B पहले print करेंगे. Then left पे 2 elements है, right पे एक ही element है. 2 blank ये left subtree के होंगे and 1 for the right subtree. Out of these two, D is the root node and F. Similarly on the right subtree, C is the root node. Then on the left subtree of C, 2 elements are there. Left subtree of C and right में 4 elements are there. Next root is G. Right subtree में देखो root is H. Only one element is left out. Left subtree में we have one element K and L. This is one approach. थोड़ा सा टाइम लगा, elements count किए and all that. So this is the standard approach. This is method 1. Anyone having any doubt in method 1? Another method is the shortcut method. इसमें मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को? Method 2. This is the shortcut. जिस तरीके से हमने post order shortcut की help से find किया था, similarly we'll find out the pre-order with the shortcut. So here we have to visit the root node first. ये तो पता है. तो इसका मतलब जो हम shortcut अप्लाई करेंगे will start it from the root node. और फिर हमें लेफ्ट सब ट्री चाहिए, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू फॉलो वन पाथ. किस तरीके से? लेफ्ट मोस्ट पाथ. रूट से स्टार्ट होंगे, लेफ्ट मोस्ट पाथ. अब बी पे जाके 2 रास्ते निकल रहे हैं, बट लेफ्ट और राइट में से किसको प्रेफर करना है? लेफ्ट वन. ए बी डी एफ खत्म हो गया. इट विल बी कमिंग बैक. नेक्स्ट इज ई. नाउ इट इज ओवर. ए इज प्रिंटेड. पैरेलली हम लिखते हैं. पहले लेफ्ट पाथ में क्या है? ए बी डी एफ. A, B, D, F. अब देखो लेफ्ट सब ट्री में कौन सा एलिमेंट बचा है? E is left out. Same concept will be applying on the right subtree C. Then to the left. अब C पे 2 रास्ते हैं. कहां पे जाएंगे? लेफ्ट वाले पे. C, G, I खत्म हो गया. अब राइट सब ट्री में आ जाओ. H is the root node. H पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. Go to the left one and then to the right subtree. So anyhow result is same, but यहाँ पे हमें number of elements count करने की जरूरत नहीं है. So this way you can apply the shortcut. By using the shortcut, easily you can write the pre-order, post-order or an order in 10 to 20 seconds. Okay, so just check out that what is the correct option. ABDF, तो ये तो incorrect हो गया. JKL, JKL. Here we have HKL. So undoubtedly the answer for this question is it's option A. तो ऑप्शंस भी मैच करने पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. ओके, इज इट क्लियर? होप दिस ट्रिक इज क्लियर.
अभी तक हमने दो क्वेश्चन ट्री ट्रेवर्सल से किए हैं. एक तो डायरेक्टली आपको ट्री गिवन था एंड दे हैव आस्क्ड फॉर द प्री ऑर्डर. तो इसी तरीके से आपसे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कुछ भी पूछ सकते हैं on the basis of the given tree. Second type of question that can be asked on the basis of the traversal is you might be given with the in order, you might be given with the pre-order or post order of a binary search tree. आपको एक ही order given होगा and you have to find out the other one. तो in order के लिए आप property apply करोगे. Third type of question is you will be given with pre-order and in order or post order or in order. ये क्यों होगा? इन ऑर्डर क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि इन ऑर्डर इज गोइंग टू सेग्रीगेट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री. प्री ऑर्डर में पहला एलिमेंट रूट है, पोस्ट ऑर्डर में लास्ट एलिमेंट रूट है, बट जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन से एलिमेंट्स लेफ्ट सब ट्री के या राइट सब ट्री के, वो इन ऑर्डर की हेल्प के बिना हमें पता नहीं चल सकते. सो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर इज मैंडेटरी. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो गेट एग्जाम है, चाहे वो नेलेट साइंटिस्ट बी का एग्जाम है, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, इसरो, डीआरयू, व्हाटएवर एग्जाम इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर साइंस और डेटा स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस मैं ये बोल सकती हूँ इट्स 99%. ओके, गारंटी तो हम किसी चीज की भी नहीं ले सकते, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस that you can get one question on the basis of the traversal. Next one, what is the best case time complexity of a quick sort? Anyone know the answer? निकिता के अलावा बाकी लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे. Why so? It's an open platform, तो आप सब इंटरेक्ट कर सकते हो, right? What is the best case complexity of quicksort? Quicksort में हमें मालूम है this is based on divide and conquer. This is one of the sorting technique which uses the concept of divide and conquer. Algorithms में आता है ना. अब जब हम divide and conquer की बात करते हैं, that means the elements will be divided into the sub problems. अब वो किसके बेसिस पे डिवीजन होगी? On the basis of the partitioning algorithm. अब दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. If you know the recurrence relation, write the recurrence relation easily, you can return the complexity. मैंने वैसे हमेशा यही बताया कि कभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज और इन चीजों को याद मत करो, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इफ यू कैन राइट द recurrence relation, write it and then easily you can return the answer. So partitioning algorithm, best case means if we are applying this quick sort on n elements, best case में हम ये assume कर रहे हैं that the problem is divided into two equal parts. Okay, this is one possibility. Another possibility is one part is completely empty and the other part is having n elements are divided into n by 2 and n by 2. तो यहाँ पे we have to apply the same concept on both the parts. Partitioning algorithm is taking order of n. So this comes out to be 2t n by 2 plus n. Now it's up to you how you are solving this recurrence relation by using the substitution method or Master's theorem. So this is returning n log n. Easily you can get this complexity. यहाँ पे तो Master's theorem will also work. In the worst case, we are assuming that remaining elements are going on the other side. वैसे n-1 होता है क्योंकि partitioning algorithm से एक element तो fix हो गया, right? So this comes out to be t of 0 plus t of n minus 1. Partitioning algorithm is taking the same time. 0 means no time is required. n minus 1 is almost equivalent to n. तो जब आप इसको solve करते हो, this comes out to be order of n squared. So this means that the best case time complexity for quicksort is n log n and worst case time complexity for quicksort is n square. So we can say that the quicksort is adaptive because best case scenario में different complexity is there and worst case में different complexity is there. So quicksort is one of the adaptive algorithm.
So here they have asked for the best case time complexity. It is n log n. So the correct answer for this question is it's option A. Make sense? Yes. Next question. Binary search tree is given to you. The tree is traversed in the pre-order. The values are printed out. Which of the following sequence is a valid output? इनमें से कौन सी valid output हो सकती है? अब बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स गिवन है, 8 एलिमेंट्स आर देयर. अब ट्री कुछ भी हो सकते हैं. वी डू नॉट नो दैट व्हाट विल बी द ट्री. दिस इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट. अब हमें ये बोला है कि दिस इज द प्री ऑर्डर, है ना. दिस इज द प्री ऑर्डर. प्री मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द रूट एलिमेंट. रूट एलिमेंट. Also, this is a binary search tree. Binary search tree की properties भी हमें पता है. Left subtree elements are smaller than the root elements and root is smaller than the right subtree elements. Let us go ahead with the option A. A में सबसे पहले आपने 5 को visit किया, फिर 3 को visit किया, then we have visited 1. Doesn't understand the solution of best case in quicksort. Okay, let's finish this question, Nikita. क्योंकि अगर मैं बीच में क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगी तो बाकी की ऑडियंस डिस्टर्ब हो सकती है. सो लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन एंड देन अगेन आई विल एक्सप्लेन इट. सो 531 यहां तक इट इज बिकमिंग अ बाइनरी सर्च ट्री. प्री ऑर्डर में एक चीज है कि अगर लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर लिया उसके बाद राइट आएगा, उसके बाद वापस से हम लेफ्ट में नहीं आ सकते. सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 2. Where should I add this to? 5, 3, 1, 2 will be on the right hand side. Pre-order यही बन रहा है. After that we are getting 4. 4, let's assume that 4 is added here. Then 7 is coming up. So we have added 7. Then next element is 8. We are visiting the tree in the pre-order. Next element is 6. Where should I add the 6? अब हम 7 के राइट सब ट्री में वी कैन नॉट गो टू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 7, बट according to the binary search tree, what is the correct position for 6? It must be on the right hand side of 5, क्योंकि binary search tree के according right subtree में जो element आ रहा है that should be greater. 6 is greater than 5, so it should be a part of right subtree. 6 is smaller than 7, so it should be a part of left subtree of 7. बट 7 के राइट सब ट्री में ऑलरेडी हम जा चुके हैं, तो वापस हम लेफ्ट सब ट्री में नहीं जा सकते. सो 6 कैन नॉट बी विजिटेड आफ्टर 8. हियर द प्रॉब्लम इज 6 कैन नॉट बी विजिटेड. बाकी सब ठीक था. 6 कैन नॉट बी विजिटेड आफ्टर 8. So A cannot be the answer. Similarly, check for the other options. Is it clear? Option A को हमने कैसे discard किया? Let's try with the option B. 5, 3, 1, 2. That's fine. Next one is 6. Since 6 is greater than 5, so we'll be going to the right subtree. अब 6 के बाद 4 आ रहे हैं. 4 should be a part of left subtree of 5 because 4 is smaller than 5. बट ऑलरेडी हम राइट सब ट्री में आ चुके हैं, तो वापस से लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकते. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? I cannot add 4 here because 4 is smaller than 5, so it should be a part of the left subtree of 5. So here the problem is with 4. 4 cannot be visited after 6 according to the given pre-order, right? Next case, 5 correct, 3 correct, 2 correct. Now 4. 4 is smaller than 5 and greater than 3. Left side में कोई element नहीं आ रहा. This is visited. Fine. अब 3 के right subtree में आ चुके हैं, तो 3 के left में तो नहीं दोबारा जा सकते. अब next element is 1.
1 should be added to the left of 3 and left of 1. But already we have visited the right subtree of 3. So this means that 1 is creating a problem. 1 cannot be visited after 4. So that's why option C is also eliminated. ऑप्शन डी अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आंसर मस्ट बी डी बट लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विजिटेड 5 देन वी हैव विजिटेड 3 then is 1 then 2 fine next element is 4 is smaller than 5 and greater than 3 ka left subtree is over right is visited then is 7 ka left and then right. So this is correct. So option D is correct. Answer for this question is it's option D. Is it clear? Quickly give me the confirmation and let me explain. Let me handle Nikita's doubt. The best case of quick sort. बेस्ट केस ऑफ क्विकसॉर्ट में हमने क्या बोला है कि जो हम पार्टीशनिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं नाउ हाउ दिस पार्टीशनिंग एल्गोरिथम इज वर्किंग आई हैव नॉट डिस्कस दैट ओके ये हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन बैच में पार्टीशनिंग एल्गोरिथम का काम क्या होता है टू डिवाइड द गिवन एलिमेंट्स इनटू द पार्ट्स such that the correct element is placed on its correct position. मेरा कहने का मतलब क्या है? Let us assume that we have the element like 4. Here we had 7, 6, 2, 1, something like this. Okay. So this is some unsorted order. Third line. This one. बच्चे ये मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की है यूजिंग मास्टर्स थ्योरम हमारे पास रेफरेंस दिस इज द रेफरेंस रिलेशन फॉर द बेस्ट केस ऑफ द क्विक सॉर्ट ओके सो Master's theorem and substitution method and recursive tree method these are the three famous methods to solve recurrence relation तो हमारे पास रेफरेंस रिलेशन आ गया था इस रेफरेंस रिलेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं यू कैन ईदर फॉलो द सब्स्टिट्यूशन मेथड रिकर्सिव ट्री मेथड or Master's theorem. The best method is the Master's theorem or you can also go for the extended Master's theorem because Master's theorem के कुछ constraints हैं, कुछ restrictions हैं. So we do have the concept of extended Master's theorem. तो extended Master's theorem से I'm referring to that only Nikita. Master's theorem is the easiest one. आप इसको ये बोल सकते हो that within a fraction of a minute you can get the answer you can get the time complexity by using the Master's theorem substitution method kaise work karte hai you have to substitute the values in the equation and finally you have to get a complete equation end pe jab aapke paas ek series ban jati hai then by applying the mathematical formulas we get the time complexity so that approach is bit lengthy okay so easiest method is Master's theorem. Recursive tree method हम तब find करते हैं when the problem is divided into the parts but जो partitioning है that is not uniform. Okay, एक part में कुछ elements आ रहे हैं second part में कुछ अलग elements है तो वहां पे हम recursive tree method follow करते हैं. Anyhow you need not to worry जो इस type के questions है ना like इस type के topics हैं इसके लिए we can conduct a marathon session like the session for 2 hours in which we can discuss all of these methods. तो पूरा का पूरा algorithms की अगर हम बात करें तो complete base is on the basis of the analysis, comparison of functions and solving the recurrence relation. These are the three important topics which provides a good base for algorithms. थ्योरम लर्न करना पड़ेगा नहीं आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट तो आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है ट्रस्ट मी
जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मुझसे कर चुके हैं, दे नो दैट कि इसमें क्रैमिंग वाली कोई चीज नहीं, आपको याद नहीं करना है. वेरी इजी अप्रोच इज देयर, बहुत इजी तरीका है, जस्ट आपको वो अप्लाई करना है. तभी तो मैं बोल रही हूँ फ्रैक्शन ऑफ मिनट, यानी कि आपको 20-30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 40 सेकेंड्स में यू विल गेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ये पीवाईक्यू सेशन लेने का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि रिसेंट ईयर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए. ओके, तो इसके बेसिस पे जो मंडे से हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे जो सब्सक्रिप्शन बैच है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यू कैन ज्वाइन दैट. उसमें भी आप सेशंस ज्वाइन कर सकते हो. फाउंडेशन बैच में विल बी कवरिंग ओनली द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूट्यूब और मास्टर क्लासेस में अवेलेबल होंगे. बाकी कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल अंडर द सुपर कोचिंग. आई होप it's clear now. Yes. Let's move on to the next question. This is the question based on the DBMS. मैंने थोड़े से mixed questions लिए. Concurrency and transaction के basis पे ये question. Here, consider a simple checkpointing protocol and the following set of operations in the log. The same question was asked in GATE as well. मैंने पहले भी बताया है, जो लोग GATE की preparation कर चुके हैं and due to some reason they were not able to score well in GATE 2023, but they are targeting on some other exams or PSUs में आप enter करना चाहते थे. So this is a good opportunity. ये जो scientist B वाली opportunity है, this is really a good opportunity because the majority of the syllabus is the same as that of GATE. And apart from that, some additional concepts are there, like the concepts of Java, Python, software engineering. वो सारे concepts अलग से cover होंगे. ठीक है, तो ये question same GATE में भी आ चुका है. I don't remember the year. I guess 2017 में आया था. GATE का question है. तो जो भी हम PYQs कर रहे हैं, इनमें से काफी questions previous year GATE questions है. Okay, so here we have to tell that कि यहाँ पे कुछ operations perform हुए, log file में कुछ operations perform हुए, and after performing these operations, let's assume that कोई crash आ गया. If a crash happens now, the system tries to recover. System किस तरीके से recover करेगा? दो चीजें हो सकती है, या तो जो operations हुए हैं उनको undo कर दो. Undo means backtrack कर दो, assuming कुछ हुआ ही नहीं. रीडू का मतलब ये कुछ चेंजेस परमानेंटली राइट हो चुके हैं, तो चाहे उसको मैनुअली रिकवर करो, बट यू हैव टू डू इट अगेन ताकि आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में आ सके. So if a crash happens now and the system tries to recover using both undo and redo operations, what are the contents of the undo list and the redo list? यानी कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं जो undo लिस्ट में आएंगी, कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं जो redo लिस्ट में आएंगी. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अनडू लिस्ट और रीडू का मतलब क्या होता है. जब कोई ट्रांजैक्शन चेक पॉइंट से पहले कमिट हो चुकी, चेक पॉइंट का मतलब होता है कि टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज परमानेंटली रिटन एंड इट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेटाबेस, यानी कि उससे पहले वाली चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं. So we need not to keep that in either of the list. ना ही हमें उसे undo list में रखने की जरूरत है और ना ही redo list में रखने की जरूरत है. Okay, so here we are given with some operations. There are four transactions, T2, T4, T1 and T3. So let me write here T1, T2, T3 and T4. Four transactions are there. सबसे पहले transaction T4 start हुई. This has started. After that, T4 is writing some value of the data item Y. Write की value, ये operation भी हो गया. Next is T1 get started. उसके बाद T1 start हुआ. Now T4 gets committed. T4 commit हो गया. Commit means changes are written. Then T1 is writing the value of the data item Z. It is performing the write operation.
Now there is a checkpoint. यहाँ पे अब checkpoint आ गया. Checkpoint means कोई transaction ऐसी है जो अभी यहाँ तक finish हो चुकी है. Yes, T4 ने जो भी changes किए थे that is committed. So its changes are reflected back. Till this point everything is fine. Let me continue here. T1, T2, T3 and T4. Next operation is now T2 gets started. Then T2 is performing the write operation on the data item X. Then it gets committed. यानी कि transaction successfully complete हो गई. After that T3 gets started. Now T3 is writing the value of the data item Z. अब यहाँ पे crash आ रहा है. T1 एक्टिव स्टेट में है, T2 एक्टिव स्टेट में है, T3 एक्टिव स्टेट में है. T4 कमिट होके चेक पॉइंट तक इट इज डन. अब जो ट्रांजैक्शन, इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई पेमेंट की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की और आपके पास कंफर्मेशन आ गई, यानी कि आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गई. अब अगर कोई क्रैश आता है और एनीथिंग गोज इन अ रॉन्ग वे, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा और द चेंजेस हैज टू बी मेड, राइट. तो हमें उस ट्रांजैक्शन को हैंडल करना पड़ेगा. बट जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट ही नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई फेलियर आ गया तो इट विल बी अनडन, कुछ हुआ ही नहीं. तो बेसिकली कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली सबमिट नहीं हुई, T1 ने कुछ ऑपरेशन किया था, T3 ने भी किया था, बट ये कमिट नहीं हुआ. So due to this reason, these two transactions will go to the undo list. T3 and T1 goes to the undo list. T2 चेक पॉइंट के बाद स्टार्ट हुआ था और कमिट भी हुआ है. कमिट हुआ है तो रीडू दोबारा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अब क्रैश आ चुके हैं T2. T4 का क्या हुआ, T4 got committed before the checkpoint. उसके बाद चेक पॉइंट आने के बाद it is permanently written. So हमें T4 को हैंडल करने की जरूरत नहीं है. So this is the undo and the redo list. Check for the options. So this is the correct one. A is the correct answer. Is it clear? So this question was from DBMS. Clear? कंफर्मेशन दे दे चलो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके अगेन विल बी रिटर्निंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. तो बेटर है स्टेप बाय स्टेप कंफर्मेशन लेके चलते. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose we have to insert the following sequence of keys into an empty binary search tree. That means you are given with the elements and we have to construct a tree. जो आपके पास binary search tree बनेगा, for that we have to return the height. Basically height is nothing but that is the maximum path length from root to any leaf node. So binary search tree की properties हमें मालूम है, that is left subtree will be containing the elements which are smaller than the root, and right subtree is having the elements which are greater than the root. So let's start constructing the tree. First element is 5. As of now tree is empty, so 5 will become the root node. Next element is 7. 7 will be compared with the root node. Since 7 is greater than 5, 7 अगर कोई element greater है तो it will be going to the right subtree. 7. 45. 45 is greater than 5, right subtree में आएगा. 7 से भी greater है तो 7 के भी right पे जाएगा. Next is 60. 60 is greater than 5. 60 is greater than 7. 60 is greater than 45. Go to the right side. 60. 50 is greater than 5, greater than 7, greater than 45, smaller than 60. So smaller है 60 से तो 60 के left side पे. 23 greater than 5, greater than 7, smaller than 45. So it will be coming to the left of its 23.
Next is 15. 15 is greater than 5, greater than 7, smaller than 45, smaller than 23. Next is 54. 54 is greater than 45, 54 is smaller, 54 is greater. Maximum path length. So this is 1, this is 2, this is 3, 3 and 4. Here we have 4 and this is 5. So maximum path length is what? That is 5. So the correct answer for this question is it's option C, 5. Clear? Easy. Next one, this is also on the basis of DBMS, that is dynamic indexing. Identify the true statement from the given statements. Here it is saying that the number of child pointers in a B or B plus tree node is always equal to the number of keys in it plus 1. Child pointers means it's talking about the block pointers. Block pointer is always 1 greater than the number of keys? Yes, undoubtedly this statement is true. True. B or B plus tree is defined by a term minimum degree, and the minimum degree depends on the hard disk block size, key size and the address size. Is it correct? Yes, we have discussed the formulas, we have discussed the structure of the internal node and the leaf node for the key. तो key हम किस तरीके से ये आपको size given होते हैं and we can calculate the minimum degree on the basis of this. If we talk about the internal node for B tree, then in that we have the block size, the block pointer size, block pointer size plus key size plus record pointer size. If here we have k block pointers, तो keys कितनी होंगी? K minus 1. That is nothing but that is the degree. So if we do not know the value of the degree, so we can calculate it. It should be smaller than or equal to block size. तो हम यहाँ से minimum degree calculate कर सकते हैं. So similarly, we do have the formula for the leaf and the internal node of a B plus tree. So easily we can calculate the minimum degree. So this statement is also true. It is asking that which statement is correct. So both the statements are correct. Hence the answer for this question is it's option B. काफी टाइम से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है. Very easy. Based on the full form of acid properties. Similar question was once asked in the GATE exam as well. It is saying that dash is not a part of the acid properties. इनमें से कौन सा acid property का part नहीं है? जिन लोगों ने DBMS पढ़ा हुआ है वो easily answer कर सकते हैं. Guys, quickly write the answer in the chat section. A stands for atomicity. C is consistency. I is isolation. D is durability. This is correct, this is correct, this is correct. Inconsistency जैसा कुछ नहीं होता, so A is not a part. So A is the answer for this question. Inconsistency is not a part of the acid properties. Maximum number of super keys for the relational schema R, which is having 4 attributes X, Y, Z, W with X as the key.
This is also from DBMS. Basically, it's based on database design. Topic name is database design. How many super keys are possible? How many super keys are possible? If X is the key, or key means simply the candidate key, we know that candidate key is the minimal super key. So X should be a part of every key, right? यहाँ पे हमारे पास 4 attributes given है X, Y, Z and W. So X is mandatory, यानी कि X तो लेना ही पड़ेगा because that is the minimal super key. So it should be a part of every super key. So there is one way, there is only one choice. हम X को छोड़ ही नहीं सकते. For Y, it may or may not be a part. For example, if X is a key, then XY is also a key. XZ is also a super key. In this case, Y is missing. In this case, Y is coming. In this case, Y is missing. This indicates that there are two possibilities for Y. We can either take Y or we can skip it. Same goes with Z. Z को ले भी सकते और छोड़ भी सकते. There are two ways. In total, how many super keys are possible? And so on, list goes on. Number of super keys, that is equal to 1 into 2 into 2 into 2. That comes out to be 8. So the answer is option B. Which of the following functional dependency in a database? This is from normalization. Topic name is normalization. कल वाले सेशन में भी एक नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आया था. मैंने उसमें बेटा आपको बताया था you should know that how to find out the keys. If you are able to determine the candidate keys, prime attributes and non-prime attributes correctly, only then you can expect कि आपका normalization का question correct होगा. If you have any problem in determining the candidate keys or prime attributes or non-prime attributes, तो normalization का question handle करना challenging होगा. Okay? All right, so here we are given with the dependencies. The relation EABD is, ये relation कौन सी normal form में? So first of all, we have to determine the candidate keys. A is determining candidate key means it should determining all the attributes, not determining all the attributes. B closer, it's determining only B and C. E closer, E is determining E and D. And what else we are having? D closer. D is determining D and E. That's it. तो यानी कि simple candidate key is not possible here. A से आपके पास A B determine हो रहे हैं. C हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि relation कौन सा given है? E A B D. So A B लाने के लिए A is mandatory. DE लाने के लिए DE कहाँ से आ रहे हैं? D या E से. So A के साथ या तो हम E लेंगे या फिर A के साथ D लेंगे. Is there any other possibility? No other possibility is there for the candidate key. These are the two candidate keys. Prime attributes are the key attributes. तो key attributes क्या होंगे यहाँ पे? It's A, E and D. From this relation, 3 attributes are the prime attributes. So we are getting only one non-prime attribute, that is B. अब चेक करते हैं डिपेंडेंसीज. पहली डिपेंडेंसी ली हमने A determines B. Is it allowed in BCNF? No, it's not in BCNF क्योंकि BCNF में हमें लेफ्ट साइड पे की चाहिए. A is a proper subset of a key. It's a proper subset of candidate key. B is a non-prime attribute. ये किसकी कंडीशन बनी? If a proper subset of key is determining a non-prime attribute, that is known as
partial dependency. This is known as partial dependency. बाकी dependencies आपको check करने की जरूरत ही नहीं है. Partial dependency, and we know that partial dependency is not allowed in second normal form. अगर कोई डिपेंडेंसी है जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी इन 3NF और BCNF, राइट? तो बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बतानी है, 2NF है नहीं, 2NF से पहले कौन सी आती है, दैट इज 1NF. सो बाय डिफॉल्ट गिवन रिलेशन is in 1NF, first normal form. So the answer for this question is none of these, because answer is 1NF. Okay. We have discussed it now. Dash traversals are not sufficient to build a binary tree. Binary tree build करने के लिए in order is mandatory. In order is mandatory. उसके अलावा आपके पास प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज प्री और पोस्ट का काम है रूट बताना, इन ऑर्डर का काम है लेफ्ट और राइट साइड सब ट्री के एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करना. सो प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर से ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यस. पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, इट इज ऑल्सो करेक्ट. पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर दोनों आपको रूट बता देंगे बट उसके आगे नहीं जा पाएंगे. सो दिस इज नॉट सफिशिएंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन सी. So I'm giving you few questions as the assignment. This will be available in your PDF जो मैं group में share करने वाली हूँ. Okay, so 3 questions are there. Remaining questions and concepts will be discussing in the upcoming sessions. तो बच्चे weekends पे marathon session is there. Timing and everything will be shared in the Telegram group. Don't forget to join it. And along with this, I'll share the PDF so that you can try these questions. Okay. So currently आखिरी मौका sale is going on. With the help of this, you will be able to get 70 plus 30% off on the subscription. Apart from that, 50% extra validity is there. यानी कि अगर आप 3 months का कोर्स लेते हो तो 3 months का पे करके you will be getting extra 1.5 month. Same goes with 6 months. 6 months में आपको 3 months extra मिलेंगे. And with 1 year, you'll be getting 6 months extra. बाकी डिस्काउंट तो है ये. टुडे इज द लास्ट डेट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर 1 घंटे में आफ्टर एवरी 1 hour there is a lucky winner who can win the smartphone. Okay, so to get the maximum discount, you can use this code Shefali S. Let me show you what benefit you'll be getting after applying this code. So here is the Akhri Mauka sale. Let's assume that, okay, let's go to the pricing. So here you can see 12 plus 6 months subscription is for 3639. यानी कि 18 months का subscription आपको 3639 में मिल रहा है. 9 months का subscription is for 3009 rupees. And 4.5 month may or may not be sufficient. So from my side, 6 plus 3 months wala course is recommended for you. And to reduce this price more, you can apply here. Currently the code जो by default code आपके screen पे show होगा ना, that is NIC 30. But if you want to get additional discount, अभी 6 plus 3 months वाला it's for 3009. Let me apply the code. Note down this code carefully because today is the last day. Yes. Now you can see this. Earlier this was coming for 3009. Now some extra discount is also available. Okay, so you can take the benefit of this. And definitely I can understand जब आप कोई भी course purchase करते हो, then we need some demo sessions or we need to know about what will be the live series, कौन से किस तरीके के mock test होंगे, courses होंगे. So all the things are available here. You can go to it and you can search. Okay, so live series, everything is available. Study notes will be provided in the form of the PDF format, so that आपको notes वगैरह और material के पीछे बहुत इधर से उधर दौड़ना नहीं पड़े. Okay,
अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है. दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम द स्क्रैच टू द प्रो लेवल. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस और सम कंफ्यूजन्स अप टू द मार्क रैंक नहीं आ पाया. दे वांट टू गिव दिस टेस्ट. तो बच्चे आप लोग टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो. तो दिस इज ऑल्सो फॉर टुडे इज द लास्ट डे. तो पास के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, वैसे द पास इज फॉर 400 रुपीज फॉर 1 year. बट अभी सेल के अंदर 2 years के लिए you have to pay 224, and if you want to get the maximum discount use the code Shefali Pass. सुपर कोचिंग के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए it is Shefali S, and for pass टेक्स्ट बुक पास कोड वही है शेफाली एस. एंड पे यू हैव टू अप्लाई पास एज वेल. शेफाली एस पास. ओके. सो ये 224 से भी रिड्यूस हो जाएगा. आई गेस ये कुछ भी नहीं होता इतना अमाउंट, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके. क्योंकि प्रिपरेशन करना सफिशिएंट नहीं है. टेस्ट देना, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना, एनालिसिस करके वी हैव टू फाइंड आउट our mistakes and then we'll be working on our weak areas. This way you can improve your performance. So बाकी मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि बच्चे एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया गया है. दैट इज शेफाली मैम टेक्स्ट बुक. लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Benefits of joining this group is you'll get the daily PDFs, you can ask your doubts, and you can also discuss whatever queries you have. You can directly interact with me. Apart from that, quiz and poll is another benefit. Okay. And जो भी upcoming notifications हैं, जो भी कुछ चीजें, कुछ surprises reveal करने, so I'll be sharing each and everything in this group, so you can join this group. Apart from that, if you like the session, if you want more videos like this for your preparation, then subscribe the channel, like the video, and share it with your friends. And don't forget to write your valuable feedback and comments. This is all from my side. If you have any doubt or query, you can ask. Otherwise, we'll end our discussion here. So in the next session, we'll be discussing previous year questions. And from Monday onwards, daily we will be having 2 sessions. I'll reveal the timings. काफी चीजें मैंने बता दी हैं, but that's okay. Completely, it's still not revealed. So stay tuned for the upcoming sessions. So thank you so much, guys. God bless you. Take care. Good night. Bye-bye.